Hi student, let's begin with question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. Each shaped like a cylinder with two hemispherical and with length 5 cm and diameter 2.8 cm. See what is given. A gulab jamun contain a sugar syrup. एक गुलाब जामुन में उसका टोटल वॉल्यूम का 30% सिरप होता है. ठीक है. उन्होंने कहा है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. तो 45 गुलाब जामुन में अप्रॉक्सीमेटली कितना शुगर सिरप होगा, दैट इज द क्वेश्चन. एंड द शेप ऑफ गुलाब जामुन इज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर. इट इज सेड दैट इट इज अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड. ठीक है, वो सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों साइड में जो है वो हेमिस्फेरिकल एंड्स है, लाइक दिस. ओके, यू कैन इमेजिन द गुलाब जामुन. सो नाउ व्हाट इज गिवन अबाउट दिस कि जो उसका डायमीटर है वो 2.8 है. तो अगर ये डायमीटर 2.8 है तो रेडियस मस्ट बी हाफ ऑफ इट, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. सो ये आपका हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया 1.4 सेंटीमीटर. एंड द एंटायर लेंथ ऑफ दिस गुलाब जामुन, ये जो गुलाब जामुन का पूरा एंटायर लेंथ है, इट इज 5 सेंटीमीटर. सो वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. हाउ? 5 ये पूरा है तो 5 में से 2.4 और 2.4 दैट इज 2.8 सब्ट्रैक्ट करके we will get 2.2 which will be the height of cylinder, and for cylindrical part radius is 1.4. okay, now how will you find the sugar syrup in one gulab jamun. एक गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, आप पहले ये कैसे फाइंड करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस वन गुलाब जामुन. हाउ? कौन कौन से इसमें सॉलिड शेप्स है, एक तो सिलेंडर है और टू हेमिस्फीयर है. सो वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर plus volume of two hemisphere. That will give us the volume of one gulab jamun. Like that, how many gulab jamuns are there? 45. We'll multiply it by 45 to get the volume of 45 gulab jamun. Once we get the volume of 45 gulab jamun, we can easily get the sugar syrup, because it is given that a gulab jamun contains sugar syrup about 30% of its volume. तो जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा 45 गुलाब जामुन का, उसका हम 30% कैलकुलेट कर लेंगे. दैट विल गिव अस द आंसर. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द गिवन. सो टोटल हाइट ऑफ द गुलाब जामुन इज गिवन टू अस. टोटल हाइट ऑफ gulab jamun is equal to 5 centimeter. Now diameter is given to us 2.8 centimeter. So your radius will be 1.4 centimeter. Then we can find height of cylindrical part. Height of cylindrical part is equal to 5 minus radius both the ends 1.4 plus 1.4. So it is 5 minus 2.8. 1.4 plus 1.4 is 2.8, which is equal to 2.2 centimeter, which is the height of cylindrical part. Okay, now let's calculate the volume of a gulab jamun. Volume of a gulab jamun, that is one gulab jamun. ठीक है. So volume of a gulab jamun is equal to, we have टू सॉलिड्स. एक तो है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक आपके मिडल में वो सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर. करेक्ट. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, राइट, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब. बट सिंस टू हेमिस्फीयर है तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे. सो विल गेट pi r square h plus 2 2s are 4. 4 by 3 pi r cube. Now let's take out common. उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं. वी कैन टेक आउट पाई आर स्क्वायर कॉमन. आफ्टर टेकिंग आउट पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या, यहाँ पाई आर स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया, इट इज h प्लस पाई आर स्क्वायर यू टुक आउट कॉमन. सो 4 by 3 तो वैसे ही रहेगा एंड इट्स पाई क्यूब, सो पाई स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर आप पाई रहेगा, सिर्फ आर रहेगा क्योंकि स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है. ऑल राइट, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. पाई इज 22/7. पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है. रेडियस इज 1.4 बिकॉज इट इज अ स्क्वायर. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस विच इज इक्वल टू 1.4.
Now let's simplify. 7 1s are 7 and 7 2s are 14, so 0.2. Now 22 2s are 44, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इट इज 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 इन ब्रैकेट 2.2. 3 से तो ये कैंसिल नहीं होता है 1.4, सो विल मल्टीप्लाई 14 4s are 56, so 5.6 upon 3. ठीक है. Now let's take the LCM of this bracket to simplify and multiply 4.4 into 1.4. It will be 6.16. ठीक है. Now in bracket, while by taking the LCM 3, 2.2 will be multiplied by 3. It is 6.6. 6.6 plus 5.6. So 6.16 multiplied by 6.6 plus 5.6 is 12.2 upon 3. ठीक है. अभी कैंसिल मत करिए और कैंसिल होगा भी नहीं. इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ओके, लाइक दैट हाउ मेनी गुलाब जामुन आर देयर? 45. कितने गुलाब जामुन है वहाँ पर? 45 गुलाब जामुन है. तो विल नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. विल मल्टीप्लाई इट बाय 45 टू गेट द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स. नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू volume of 45 gulab jamun is equal to, this is 6.16 multiplied by 12.2 upon 3. ये था हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम. अब 45 का निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 45 कर दीजिए. 3 से 45 आपका कैंसिल हो जा रहा है. 3 1s are 3 and 3 5s are 15. All right, so we have 6.16 multiplied by 12.2 multiplied by 15 centimeter cube. Okay, this is the volume of 45 गुलाब जामुन. ठीक है. इसका प्रोडक्ट नहीं निकाला पर्पजली क्योंकि अभी भी इसका 30% निकालना बाकी है. सो अगर वहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाता है तो लास्ट में हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड विल फाइंड द प्रोडक्ट. नाउ लेट्स फाइंड सिंस द क्वांटिटी ऑफ सिरप. कितना दिया है हमको क्वांटिटी ऑफ सिरप? सिंस द क्वांटिटी ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन कितना दिया है हमें? 30%. इन गुलाब जामुन इज 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. देयरफॉर यू कैन से वॉल्यूम 30% वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 6.16 into 12.2 multiplied by 15 multiplied by 30%, that is 30 upon 100. That will give you the exact syrup which in the 45 gulab jamun. This 0 and 0 get cancelled. Now 5 3s are 15, 5 2s are 10, and this you can cancel by the table of 2. 2 6s are 12 and 2 1s are 2. 6.16 into 6.1 into 3 3s are 9. So the product of 6.16 into 6.1 is 37.576 multiplied by 9. So the product of 37.576 into 9 is 338.1844 centimeter cube, and approx लोगे तो it will be 338 centimeter cube approximately.